संसारदावानललीलालोका त्राणाय वंदे गुरो श्री
Vande Guru
Thank you.
की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य हर्षवर्धन श्री कृष्ण भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य हरिदास ठाकुर की प्रेम से तो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की मथुरा वृंदावन धाम की नवदीप मायापुर धाम की जगन्नाथ क्षेत्र की बाकी महाराज प्रभुपाद राधा कृष्ण की जय और all glories to Sri Guru and Gauranga, all glories to
वृंदाय तुलसीदेव्याय प्रियाय केशव कृष्ण विष्णुमूर्ति वृंदे सत्यवते नमो नमः वृंदाय तुलसीदेव्याय प्रियाय केशव विष्णुभक्ति वृंदे सत्यवते नमो नमः वृंदाय तुलसीदेव्याय प्रियाय केशव विष्णुमूर्ति वृंदे सत्यवते वृंदाय तुलसीदेव्याय प्रियाय केशव विष्णुभक्ति वृंदे सत्यवते नमो नमः वृंदाय तुलसीदेव्याय प्रियाय केशव विष्णुमूर्ति वृंदे वृंदाय तुलसीदेव्याय प्रियाय केशव विष्णुभक्ति वृंदे देवी तुलसी महारानी की केतोलक्षणमार्जनं भावादावादिनिवारणं श्रेयाकैरवचन्द्रिका वितरणं विद्यावधूजीवनम् आनन्दामुधिवर्धनं प्रतिफलं पूर्णामृतास्वादनं सर्वात्मास्नपनं परं विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनं राम नामकारि बहुधानिज सर्वशक्ति तद्दात्वितानि अमिता स्मरणेन काला एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमीदृशं याजनिनानुरागः कृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिनमानदेन कीर्तनीया सदा हरि नदनं न जनं न सुन्दरीं कवितावाचकदीशकामये मम जन्मनीश्वरे भवतात्पत्तिरहेतुकी त्वयि वैनन्दातनुजा किङ्करं पतितं मां विषमे भवाम्बुधौ कृपया तव पादपङ्कजासितधूलिसदृशं विचिन्तय नयनं गलदश्रुधारया वदनं गलदया विरहा कुलकर्षिताङ्गुकरः तव नाम ग्रहणे भविष्यति युगायुधं विवेशेन चक्षुषा प्रावृषायुधं शून्यायुधं जगत् सर्वं गोविन्दाविरहेण मे आश्रित्य पादरतं विनुष्टुमाम् अदर्शनान् मर्मागतां करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लक्ष्मणो मत्प्राणनाथस्तु स एव नापरः हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री श्री शिक्षाश्रम की श्री चैतन्य महाप्रभु की Following are the 10 offenses to be avoided while chanting the holy name of the Lord. First offense is to blaspheme the devotees who dedicated their life for the propagation of the holy name. Or independent of the name of the Holy Spirit. Third, to disobey the orders of the spiritual master and consider ordinary purpose. Fourth offense is to blaspheme the Vedic literature and the literature and pursuance of the Vedic question. Fifth, to conceive or sanitary imagination. Sixth, to give some interpretation to the holy name of the Lord. Seventh, to consideration for the holy name. Eighth offense is to consider the chanting of the holy name as one of the auspicious ritualistic activities offered in the Karma Kanda portion of the Vedas. Ninth, to initiate a continuous person about the holy name. Then, do not have complete faith in the chanting of the holy name and to maintain better attachment even after understanding so many instructions on this matter. It is also an offense to be initiated while chanting. Every devotee who claims to worship must regard this offense in order to quickly achieve the desired Krishna Prema. Let us offer humble obeisances to all the Vaishnava devotees of the Lord who are just like these artists who can fulfill all desires, are full of compassion for the fallen conditioned souls.